Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें लीनियर वेक्टर स्पेस उपरे बेस्ड करी किछिटा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन डिस्कस करिबा यार पार्ट 1 सो फर्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 72 एटी कहूची शो दैट द वेक्टर्स तीनटा दे देला आर लिनियरली इंडिपेंडेंट एटा प्रूव करिबार अछि सो आमे तीनटा वेक्टर को असाइन कला u v एंड w ओके रेस्पेक्टिवली आमे जो कोऑर्डिनेट देछि से हिसाब रे i j k यूनिट वेक्टर असाइन कर देला मल्टीप्लाई कर देला ता माने okay now if we know that alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w equal to 0 ताले u v w रो वैल्यू हमें पुट कला ओके याको एबे हमें ठीक है सजाड़ी की लिखि देबा i j और k रो टर्म को कॉमन नहीं जिबा ओके नाउ कंडीशन एबे आसिला कोन it should be satisfied only if alpha 1 plus alpha 2 plus 2 alpha 3 माने जो कोएफिशिएंट अछि i j और k रो the coefficient should be equal to 0 okay so ये तीनटा इक्वेशन हमें पाइला now multiplying equation 1 by 2 okay माने सॉल्व करिवार अछि in order to get the values of alpha 1 alpha 2 and alpha 3 okay so एठी देखो alpha 2 plus alpha 3 equal to 0 हे गला similarly equation 1 सहित 3 ऐड करिबा और ऐड करिबा equation 3 सहित so हमें फाइनली पाउछु equation 4 और 5 should be satisfied only if alpha 2 equal to alpha 3 equal to 0 hence alpha 1 will also be equal to 0 so this shows that any linear combination of the given vectors will be 0 if all the coefficients of the expansion that is alpha 1 alpha 2 alpha 3 are 0 tenukari we can say that the given vectors are linearly independent आ गोटे अल्टरनेट वे भी अच्छी डिटरमिनेंट जदि आम बाहर करवा जो कोफिशिएंट आमको देइथिला तीनटा वेक्टर ओके सो फर्स्ट थिला 1 2 -3 देन 1 3 -2 देन 2 -1 5 यार डिटरमिनेंट जो 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट हैला दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ताले मध्ये हम कहि परिबा द गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट ओके अच्छा मूविंग ऑन टू द एग्जांपल नंबर 73 check whether the following vectors are linearly dependent or independent and state which set forms a basis for v3 group okay so हमको एठी दुईटा सेट दे देछि okay अच्छा again हमें assign करिबा u v w vectors suppose हमें कहला it is forming a basis for the three dimensional space that is v3 group then the linear combination exists and should be a unique one तेणु alpha जदि हेगला vector equal to alpha 1 u plus alpha 2 v plus alpha 3 w and it is non-zero and unique components of u v w then it must be non-zero अच्छा फर्स्ट जो हमको देइछि वेक्टर ता पई हमें लिखिला सपोज d equal to determinant एटा u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3 माने सब जेते कोएफिशिएंट रो डिटरमिनेंट काढिबा देखो आछि यार वैल्यू -20 which is non-zero so as this determinant has the finite value so the vectors are linearly independent and form a basis under v3 तापरे सेकंड सेट जो दैथिला ता पई डिटरमिनेंट काढिबा देखिबो यार वैल्यूटा आसीबो 0 तेणु 0 जेहेतु हो जाउची ए डिटरमिनेंटा so the given vectors are linearly dependent and do not form a basis under v3 okay moving on to the next problem example number 74 so that the vectors a b and c in terms of I j k दे दीजिए
form a linearly dependent set of vectors. Okay, dependent कहला माने very easy आमे याको determinant way रे भी solve करि परिबा. Otherwise we have देखो जो vector देछि a b और c, so एठी suppose a सहित आमे 6 को multiply कर देला, so 6a आसीगला equal to 3c plus 2b माने a equal to 1 by 3b plus 1 by 3c. so एटा आछि a b और c भितर relation आसी जाउछि depend करछि ता माने. okay, clearly a b c form a set of linearly dependent vectors. otherwise तमे determinant way रे भी solve करि परिबो, तार value टा 0 आसीबो देखिबो. अच्छा, से जा भी हो. Next problem, example number 75. Show that the vectors u plus v, u minus v, u minus 2v plus w are linearly independent provided u, v, w are linearly independent. Okay, so u plus v, u minus v, u minus 2v plus w एटा linearly independent केतेबेले हबो. again हमर combination जदि हम लगेबा alpha 1 alpha 2 और alpha 3 सहित respectively should be equal to 0 only if alpha 1 alpha 2 alpha 3 0 होथबा कथा. okay, so याको एबे टिके हमें सजाडी की लिखि परिबा u v और w रो टर्म को कॉमन नै जिबा. okay, as you can see now as u v w are linearly independent vectors, therefore we must have तार कोफिशिएंट 0 हबो समस्तंकर. ओके, सो 0 जेतु हे गला अल्फा 3 देखो ऑलरेडी हमें 0 पाई गला. दैट मीन्स याको एबे जदि हमें पुट करिबा एंड सॉल्व करिबा ताले सबु जेते कोफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एटा 0 हबो. सो इफ u v w are linearly independent vectors, then we can say u plus v, u minus v and u minus 2v plus w are also linearly independent. Okay, next problem, example number 76. From the set of vectors 1 0 1 0 0 1 1 1 0 construct a set of orthonormal vectors. orthonormal कहला. अच्छा, जो हमको vectors देछि ताको in terms of हमें unit vectors लिखि दबा u1 equal to I plus k. देखो जे हेपनी बिकॉज एठी ऑलरेडी 0 अछि. ओके, y कोऑर्डिनेट. सिमिलरली u2 और u3 को हमें लिखिला in terms of I j and k. let the orthonormal vectors याको हमें कहबा v1 v2 v3. ओके, कहार orthonormal ना u1 u2 u3 रो. now Smith orthogonalization method एबे हमें apply करिबा from which v1 should be equal to u1. okay, and v2 should be equal to u2 minus a21 v1. okay, केमती आउछि एटा तमे ऑलरेडी स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन मेथड को प्रीवियस क्लास में पढ़ाई छी ताको देखिबो. ओके, सो v2 रो एटा हला वैल्यू from which the coefficient a21 is coming out to be this much. तापरे थर्ड वेक्टर टा हला v3 which is u3 minus a31 v1 minus a32 v2. so a31 और a32 हमें पाई गला. ओके, अच्छा, we already have v1 equal to u1, u2 is equal to k cap. so v1 equal to which is mod of vector v1 एटा आसीगला √2. so याको एबे हमें पुट करिवा we are getting the value of a21 जोटा कि एई जगह रे यार वैल्यू टा आसीगला हाफ. now v2 रो वैल्यू जोटा हमें लिखितिला this much. okay, एठी अगेन हमें रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करिवा u2 और v1 रो. we solve it, यार वैल्यू एतकी आसीला. मैग्नीट्यूड जदि बाहर करिवा आसी जिवो 1 by √2, so that the coefficient a31 आसीगला अगेन हाफ. ओके, तापरे एबे v3 हमें देखिवा जोथिरु हमें बाहर करिवा a31 तो ऑलरेडी बाहर कर सला, a32 टा रही छी. ओके, a32 v2 आउ u3 रो वैल्यू पुट करिवा. v2 रो स्क्वायर अछि तळे. ओके, सो 1 by √2 पाइतला, सो स्क्वायर हेगला 1 by 2 तळे. ओके, यार वैल्यू टा आसीगला -1. आ जेमते कहितली एबे v3 यार वैल्यू टा हम इजीली बाहर करि परिबा. देखो आसीगला j cap. thus the orthogonal vectors are like v1 जोटा आसीला I plus k, v2 which is coefficient हमें तार वैल्यू पुट करछु minus half I plus half k, आ v3 हेगला j cap. so normalize एबे जदि करिबा v1 v2 v3 को orthonormal set of vectors will be now v1 dash equal to v1 by v1 mod माने vector divided by its magnitude.
So I plus k by root 2. Similarly v2 dash ହେଇଗଲା minus I plus k by root 2 ଆଉ v3 dash ହେଇଗଲା j. ओके दस द रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जोटा हमको क्वेश्चन पचार ताकू आम लिखिपर 1 by root 2 0 1 by root 2 then minus 1 by root 2 0 1 by root 2 आउ 0 1 0 केमती आसला देख या लक्ष्य कले जो v3 डैश v2 डैश आउ v1 डैश या लक्ष्य कले तुम यहाँ जापर जस्ट यू रिप्लेस द यूनिट वेक्टर्स I j and k कोफिशिएंट तुम जार यूनिट वेक्टर जो कोफिशिएंट ताकू सेही जगह लगे माने I जदि अच्छी ताले x जगह लगे j जदि अच्छी y जगह लगे आउ k जदि अच्छी z जगह लगे. Okay, now the next problem, this I have taken from another book. Determine whether the four vectors चार्टा वेक्टर दे देला u v w x क्वेश्चन पचारछि they are linearly dependent or independent एटा बाहर करबा कहूची. So we solve the equation जेहेतु चार्टा वेक्टर देछि a b c d हमें चार्टा कोएफिशिएंट नहीं गला unknown they are. Okay, and let us say that au plus bv plus cw plus dx equal to 0. Okay, now substituting for the vectors from equation 9 and using the rules for vector addition and scalar multiplication. देख ये या ये डायरेक्टली दे दी ये बही सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म देख ए यू. ओके यू रो वैल्यू आम पुट करवा यू रो फर्स्ट एक्स कंपोनेंट 1 अच्छी सो ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए. तापरे नेक्स्ट बी भी ओके भी रो देख ये टर्म एक्स रो व्हिच इज 2 सो एटा आसीगला 2b. तापरे सी डब्ल्यू सो डब्ल्यू रो एक्स कंपोनेंट होची 1 सो ओनली c. तापरे dx x रो एठी x कंपोनेंट हिगला 2 दैट मीन्स 2d. सो या आई जे के जमती आम ऊपर बही रे देखिला से हिसाब रे लिखिले आई थिंक बेटर हबो. सो ये एठी डायरेक्टली दे दीची से जहाँ भी हो तीन टा कंपोनेंट्स आम x y आउ z रो कंपोनेंट एटा हला x एटा y आउ एटा z should be equal to 0 and this gives us three simultaneous equations. Okay या एबे सॉल्व करिबा on solving एठी अगेन डायरेक्टली दे देला b c आउ d रो वैल्यू. Okay in terms of a एटा को बाहर कला. Okay, now equation 10 can be satisfied without all the coefficients being 0 and we can write equation 10 using equation 13 because आमे b c d को पाई गला in terms of a. Okay, so let us take a equal to 5 ताले equation 10 को आमे ए हिसाब रे लिखि देला 5u plus 12v minus 3w minus 3x equal to 0 and the given vectors are therefore linearly dependent. Okay, because a b c d they are actually related आमे पाई गला रिलेशन जेहेतु b c d को आमे in terms of a जेहेतु लिखि देला that means they are not linearly independent rather they are linearly dependent. Okay, Thank you.